Hello all. I hope everyone is good. This time checking, testing mic. आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो जस्ट यस हेलो ऑल. आज बहुत हम इंटरेस्टिंग थिंग्स. हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल. Here we are learning the different types of Java functions or methods, how they're working, their types and everything. Okay, thanks for watching my video. Just a second, I want to be retake. Yes, I am funny. I was making fun. ठीक, leave it that joke apart. Okay, तो मैं बहुत ऐसे होके नहीं क्या बहुत प्रोफेशनल होके नहीं सिखाती. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फनी एंड ऐसे करके देखती हूँ. जस्ट अ सेकेंड, आई हैव टू स्टार्ट दिस देन ओनली आई विल गेट इट. ओके, वेलकम बैक टू माय चैनल वेयर वी आर लर्निंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जावा मैकेनिज्म्स, देयर वर्क एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग. ओके, टुडे इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है जहाँ पर हम स्टार्टिंग पार्ट देखने वाले. स्टार्टिंग मीन्स व्हाट? Eclipse का. How the Eclipse is working, how Eclipse working. Before of that we should know Eclipse कैसे यूज किया जाता है. ओके, कैसे यूज करना होता है, उसका वर्क स्पेस क्या होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम रिसेंटली वन इंटरव्यू आई गॉट एंड उस टाइम पे मुझे बोला गया कि प्लीज क्रिएट अ वर्क स्पेस. आफ्टर देन क्रिएट everything, means set the environment and after then create your everything. Okay, so the starting is so much important to be understand how to get that idea. Okay, they would we say jdk का type change करो, this change करो, anything they can say. So that is the so much important thing which we are going to learn in today's video. Let's get started. Okay, just I am sharing the screen. ओके, एक्चुअली ना इसको छोटा किया जा सकता है. परफेक्ट. ओके, परफेक्ट. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू. आई एम चेकिंग. Yes, my screen is visible. Yes, I have got the thing. Chalo, let's get started. How we can create it? First of all, I will say the scenarios what is the available on the Eclipse. First of all, you people should know Eclipse means what. Eclipse is the platform, is like a working as the IDE, integrated development environment. वहाँ पर हमको मिलता है, means where we can compile as well as do our means after the compilation happening, that JVM things, after the compilation the code we are getting our native means native code which is the understandable to the machine, like that we are happening. Okay, in the background it's happening. The two things are the in one way. So how it is one way, that we are, I will say that. Okay, how it is till the watch this video till the end, you will understand every and everything till the end. Okay, that is so much important. First of all, I will show you the file, and here I will show, here is a something new ws sat. That is, don't worry about it, what is that, just understand. So you can see here my Eclipse, when I try to be switch to the workspace, it showed me as to be restarted. It's like a restart the function. Okay, yes, I have the downloaded the Eclipse. You can see my desktop also. So this is the something we having to here. Okay, as of now we don't need. So this is the work as a looking. Okay, something practical Saturday, whatever the data I have put it.
So interesting part is coming to the here. Java SE 17 मीन्स व्हाट, तो 17 का वर्जन है जो हमको यूज करना पड़ता है. बट नाउ यू शुड हैव द हाउ दिस वर्क स्पेस स्पीचेस हैपन. Here is another option, so we can take it. So how to create that, how to do that, everything, now we are going to make it that. Okay, now just watch it so much carefully. Okay, we will go this destination to be make it this. Okay, see this is the drive where I am creating my every workspaces. Okay, how we can create it, how we can delete from start to end process, I am going to see you. Let's get started. अभी के लिए I need one folder which will store my each and every programs. Okay, I will show you also what is happening there. First of all, I will create as a YouTube. Okay, YouTube, that's it. Okay, that's it, YouTube I will create, that's it. Now I want to be switch it. Okay, I want to connect with Eclipse, so it will ask me to other, they will ask. So here I will go to be browse it, and here in same time I will go to here and I will say to them select the folder. If I am selecting the folder, then it will ask, you can see on the launcher side what they are saying. Eclipse IDE use the workspace directory to store its preferences and development art फैक्ट्स. मीन्स जो भी आगे आने वाले हैं आपके जो वर्क जो इसमें इस फोल्डर में ऐड होने वाले हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग विच वी शुड अंडरस्टैंड. तो फिर से रिस्टार्ट होगा एंड वो मुझे क्रिएट करके देगा वर्क. दिस इज द वन थिंग. ओके, दिस इज द वन थिंग ओनली. आगे जाके सो मच इम्पॉर्टेंट. नाउ जस्ट वी क्रिएटेड द फोल्डर. ओके, आफ्टर देन वी विल क्रिएट वन प्रोग्राम एंड देयर वी विल पुट हेलो वर्ल्ड. ओके, जो बोलते हैं ना फर्स्ट वाला प्रोग्राम as a beginner level, which we should understand how it is keep creating, how their folders, how their packages and everything happening. So this is my page, so I will close it for now as a welcome, and here the 4 to 5 options will come and they will say import the project. For example, this scenario also happened with me. Import the project means if my another project whatever I was working, there happens something glitches is like a font issue happen, or everything became the black, not able to understand, not able to like we are saying something is crypted or what is that, something like happen, means no data is properly available. So that time we can import it that. Okay, they are giving the options also. So create a new project. So this is my first work to be so much important step. Okay, first step to be create the project. We have to go to the create the project. After then second process to the Java project. Always we have to search for the Java project. You can check it like that also. Nothing is there. Double click if we will do, then it will show you. Okay, now there is an interesting part. The project name which we have to give, which we will use for the long purpose. So I can give as a YouTube work underscore work, whatever I can be, combination of words, letter, lowercase. Here also they give module name, and by the convention module name usually start with the lowercase. तो आप यहाँ पर ऐसे दे सकते हैं. ओके, द क्रिएट जावा प्रोसेस वर्क इंटरनल वर्क पर्पस. तो यहाँ पर आने के बाद ये हमको मॉड्यूल का नहीं चाहिए अभी के लिए, तो वो अनचेक कर देते हैं. बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो इंटरव्यूअर है उसका एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि जावा 21 में नहीं चाहिए, मुझे आगे वाला चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 24 इज एग्जिस्टिंग, मुझे 25 चाहिए. तो 25 मुझे जावा डाउनलोड करना पड़ेगा उसका किट. ओके, जावा का उसका किट मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा. दैट आई विल शो इट, बट फॉर नाउ आई विल शो इट हाउ आई कैन टेक फ्रॉम देयर ओनली. ओके, टेक फ्रॉम हियर ओनली. फॉर एग्जाम्पल 23 or 24 आई वांट. ओके, simple. This is the process I have to do, and finish it will be create everything. Nothing I have to create apart from that. Okay, this is the first way I am showing whatever the available from this. Okay, for example in future 26 you are going to do it, and that time you have to say to them remember my decision and no. Okay, no, this is the price. Okay, so this according to that I have created this 24. Here I have to create how to create a
package and the class I will show you after. Just a second, I just want to show you another, okay, another, this one, how we can create. So here only I will go new, so much important, new project, where my manager said, you now don't we don't want 24, we want something else, means more than that, like in future. For example, my dev I have downloaded as a like a 24 is not available, 27, 28, how I can do it? Java. After then next, here I have to put like a YouTube 2, okay, 2, that's it. And what I gave the YouTube to work, okay, same. Here I will go, here I will say no, we don't want. And here is the interesting part. Now first option we have to not choose, second also nothing is there, we have to go here as to be select configure. How to do? So much important, guys, so much. Before I have took this, okay, before I took this from the, how we can took that, I will say that, for example, there is a not available, okay, I will remove this. Must be select, and we cannot, I guess, remove, yes, removed it, okay, removed it. Now I want only and only 25. How I can? To add, this is the, okay, standard only we want VM, यहाँ पर directory, okay, यहाँ पर directory. And here we have to check where we kept our as a downloaded 25 version, okay, we have to check it that. Here most of the time it's available in users, just a second, program files in Java, okay, this is the one which I have downloaded recently in a 20 something like that. So I have to select that, okay, you can go it inside, you will say JDK. So this is the folder which we want, so we can put it like JDK 25, select the folder, understood? Simple. After then kuch bhi nahi, we have to put a finish, means what I did, 25 I downloaded as a normally, how it's coming I will show you that, just a second. Java 25 डाउनलोड, ओके, ओरेकल का आता है। तो यहाँ पर जाके हम, ओके, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, यहाँ पर जाके विंडोज पे जाके 25 का ही होगा, 25 एंड जावा 20 अर्लियर अवेलेबल, ओके, ऐसे करके। तो यहाँ पर जाके वी हैव टू टेक दिस वन, ओके। तो ए वाला जो होगा मेरा 25 का होगा, देखो JDK ऑलरेडी मेरे पास है, तो इसकी वजह से नो नीड, सो आई विल नॉट डाउनलोड, नॉट इंस्टॉल और नॉट डाउनलोड। सो दिस इज द वे। सो यहाँ से मैं डाउनलोड करूंगी और वो कहाँ पर जाएगा, मेरा फाइल्स में जाएगा, ओके, दिस इज द प्रोसेस। तो ये आ गया, ये हो गया। तो JDK मेरा 25 मैंने यहाँ पर फिनिश लेके उसको मुझे सिलेक्ट करना होगा, राइट। यहाँ पर नहीं था बिफोर ना, हमने वो रिमूव कर दिया था, दैट्स इट। 25 करने के बाद वी हैव टू जस्ट पुट एज अ apply it will do the immediately it will apply and close, immediately it will show as a JDK 25, and here also they will show, and here is the, just we have to check the cross check like that, current space 24, they are showing one error also, like the current workspace used at 24 JRE compiler compiles the level 25, this is not recommended, and either the JRE or the compiler compliance the level should be changed। तो समझ में आया। तो क्या हुआ यहाँ पर एक एरर, मीन्स दैट इज नॉट एरर बट लाइक अ रिकमेंडेड वे दे हैव जस्ट सेड, लाइक यू आर यूजिंग 24 also compiler and 25 also compiler, okay, anyway both are from the level of from the 21 only, but for the understanding purpose we cannot, means this is the so much like important, only one workspace you cannot use 24 and 25, you have to create that another. For the showing purpose I am showing you how we can manage them both, okay. Now I can show you how it is 25 and how it is 24 came. This is so much important, where we are understanding how to create this from the start to end, okay, so much important. Now I will take it only 24 as your wish. I will take it only 24 to be create, how to create our first package, how to create our first class, okay. Here I will go simple, new
package. Okay, package name should be start from लोअर केस. तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, डॉट दूंगी. तो यूट्यूब वर्क एंड उसके आगे आई विल पुट एज अ रिकमेंडेड वे. तो इट शुड बी सोर्स. दिस इज कॉल्ड द सोर्स. ओके, कीप इन टू योर माइंड दिस इज द सोर्स. एंड यहाँ पर मुझे पुट करना है मेन. तो पैकेज का नेम शुड बी इन लोअर केस मोस्ट ऑफ द टाइम, मेन. अभी मैं एक पुट करती हूँ 1 2 3. तो नॉट रिकमेंडेड एज दिस. तो मैं पुट करूँगी टास्क स्मॉल लेटर एंड मेन. तो इसका मैं ना एक मैजिक है वो दिखाने वाली हूँ. फिनिश. ये होगा मेरा फर्स्ट पैकेज. उसके अंदर मेरा होगा मेन एज अ 1 क्लास. ओके, मेन एज अ 1 क्लास. उसको स्टार्टिंग शुड बी कैपिटल. इफ आई वॉन्ट एज अ पब्लिक with that I can put it there. If I don't want, no need to put it. Okay, simple, it's done. Yes, if I will click on here, they will give as it is to me this main public static void main string args, like that. My main, this is the, and this is my package, this is my class name, this is my package. Now the interesting part, coming to the part. Okay, just come. Yes, everything is fine. Okay, here is interesting part. Just a second. Here is interesting part. I will show you how the inside package we are saying it is like the folder. It is inside for the we are saying what is the purpose of the using the packages is like a folder. Okay, we can organize our task in organized task. There is having first as a source. This is the source. Okay, if YouTube is deleted, nothing I will get. Okay, YouTube is a main. So inside of that metadata, YouTube work, like that. One is for 2021 and one is for 22. Sorry, one is the normal this I created. उसके बाद अंदर, ओके, उसके अंदर मैं जब जाती हूँ बिन के अंदर, उसमें YouTube वर्क आ गया. उसके अंदर देखा, समझ में हाउ मच फोल्डर्स आर क्रिएटेड. YouTube वर्क, उसके बाद टास्क, उसके बाद मेन आएगा मेरा. देखो इसके अंदर. ओके, मेन. ओके, इसके अंदर मेरा मेन. तो समझ में है. जब भी मैं कंपाइलर में यूज करती हूँ तो क्रिएटिंग टाइम ही वो डॉट क्लास फाइल क्रिएट करता है. बट जब मैं कंपाइल करती हूँ इसके अंदर कुछ होगा क्या? नहीं होगा. बिकॉज हाँ होगा, बिकॉज मेन एंड एवरीथिंग आई जस्ट पुट इट ना. लिटिल बिट डेटा विल बी देयर, नॉट दैट मच. अंडरस्टूड व्हाई दिस इज लिटिल बिट? बिकॉज अब मैंने अभी कहाँ से कौन आया है, उसने वो बोला है टास्क वहाँ से आए. देखना अभी इतना डेटा है ना, तो आगे जाके कितना डेटा होगा. दिस इज कॉल्ड द बाइट कोड. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर मैं पुट करती हूँ थोड़ा सा लाइक इंट. हाँ, इसको ये समझ में आया. फर्स्ट इज लाइक माई हाउ इट्स केम. हाँ, इसको मैं पुट करूँगी अभी सिस्टम. आपको पता है प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं system dot out dot println. Okay, simple line is that. Okay, same like that I will put system dot out dot print ln. समझ में आया इतना तक? हाँ, ऐसे करके हमको उसको क्लोज करना पड़ता है. ठीक है, इसके अंदर आई हैव टू पुट द स्ट्रिंग. दैट टाइम आई हैव टू पुट द डबल कोट. उसको बोला जाता है हेलो वर्ड. ओके, दिस इज द सेम बेसिक, सो मच बेसिक वे आई हैव पुट इट. पब्लिक मैंने क्यों लिखा? फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल नॉट राइट एंड इफ आई विल सेव, देन व्हाट विल हैपन? वी विल डू इट दैट. ओके, हाँ, रन कैसे किया जाता है? This is the way we can directly run, but what they will say, the selection cannot be launched and there is a no recent launches. Okay. तो हमको क्या करना पड़ता है? राइट क्लिक, रन एज. ओके, उसको पब्लिक मिला ही नहीं इसके वजह से. ओके, इफ आई विल पुट द पब्लिक देन ओनली. सो when the JVM wants to run any or the load any class, they are always checking for the main method. With the main method they want always the public static void. If you will miss here and there you can make it like a public and static, you can make it here and there, but void it should be there. Okay, if you will not void का meaning है no return anything. मेन का पार्ट है मेन एज अ जेवीएम ऑलवेज लाइक अ स्टैंडर्ड नेम. एंट्री का नेम है उनके पास, दैट्स इट. पब्लिक का नेम JVM कैन बी एक्सेस फ्रॉम द एनीवेयर. स्टैटिक इज द लाइक बिफोर ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट दे शुड बी कम टू द मेन. ओके, बिफोर ऑफ क्रिएटिंग. स्टैटिक इज फॉर द क्लास लेवल. ओके,
क्लास लेवल होता है, इसकी वजह स्टैटिक वॉइड विदाउट रिटर्न पॉइंट, बिकॉज जेवीएम का वर्क नहीं है रिटर्न एनीथिंग. इफ आई विल पुट एज अ रिटर्न इंट बिंट एनीथिंग, देन दे विल से अरे व्हाई आई हैव टू, माय वर्क इज टू बी जस्ट एग्जीक्यूट द मेन, नॉट टू रिटर्न एनीथिंग. मुझे कुछ मीन्स वो ऐसा हुआ ना भाई, तुम मुझे गेट मीन्स हमारे पास होता है ना, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड. फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी गार्ड इज देयर, सिक्योरिटी गार्ड में वॉइड को बोलती हूँ एंड वो आया है एक बच्चे को स्कूल में छोड़ने के लिए. ओके उनके यहाँ के एक बच्चे को छोड़ने के लिए, एक बच्चा है मेन. ओके मेन को छोड़ने के लिए आ गया है, तो ऐसा नहीं होगा ना वो स्कूल में भी आ जाएंगे, नहीं ना. उनका काम क्या है भाई, मुझे मेरा काम है तुम्हारा स्कूल का गेट तक आने के लिए, मेरा काम नहीं है कि फिर से मैं तुझे लेने के लिए आ सकता हूँ, दैट इज अनदर स्टोरी. बट यहाँ अभी मेरा काम है तुम्हारा स्टडी करने का, मेरा काम नहीं है अंदर जाके क्या रिटर्न करे, कुछ भी नहीं करे. बाहर आने के बाद हम देखेंगे, ठीक है, ऐसा होता है. तो इसके वजह से नो रिटर्न टाइप. तो ऐसे सब कुछ मैंने सेव करके, सेव कंट्रोल यस करके यहाँ पर जाऊंगी रन एज, तो यहाँ पर जावा एप्लीकेशन आता है. ओके डाउनवर्ड. तो अभी अकॉर्डिंग अदर थिंग विल हैपन. ओके नथिंग हैपन, दैट इज गुड एक्चुअली. हाँ तो यहाँ पर आया हेलो वर्ड प्रिंट हो गया. ओके समझ में आया. सो मच सिंपल इज देयर, नथिंग इज देयर दैट मच लाइक रॉकेट साइंस हाउ इट्स हैपनिंग है. ओके अभी मैं एक थोड़ा सा करती हूँ, कंसोल को ही मैं हटा देती हूँ, मुझे हाँ कंसोल नहीं चाहिए. मैं 2 to 3 ways I am going to show you. It's terminal, console, everything. I don't want. Means no need actually. इंटरव्यू के तरीके से मैं बता रही हूँ. इंटरव्यू में ऐसा ही होता है. वो क्या करते हैं, सब कुछ क्लोज करने के बोलते हैं ना, अभी करो, ये भी हटा दो, मुझे कुछ लेना देना नहीं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. इंटरव्यू में ऐसा ही होता है, वर्क स्पेस क्रिएट करो बाद में करो, तुम्हारा क्या ताम झाम है, ऐसे बताते हैं. ओके इफ आई एम सो मच रूड देन जस्ट सॉरी फॉर दैट, बिकॉज आई फेल्ट लाइक आई मेड समथिंग लाइक. हाँ ओके दिस इज ओके. हाँ तो अभी एक नॉर्मल पर्सन विल कम. ओके जावा एप्लीकेशन, चलो रन कर दिया, कंसोल यहाँ पर आया. फॉर एग्जाम्पल दे विल से कंसोल मुझे यहाँ पर भी नहीं है, मीन्स नहीं है, तो क्या करोगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी एक कहाँ पर गया, तुम्हारा एक्सप्लोरर जो फाइल का मैनेजमेंट था, तो कहाँ पर मिलता है, विंडोज पे मिलता है. वही तो इक्लिप्स का फायदा है, जो कुछ भी जो हो जाए कहाँ पर भी मैं रेडी हूँ आपको देने के लिए. इसे बोलती है फ्लेक्सिबल यूज ऑफ इक्लिप्स. ओके एक और एक थिंग, मुझे शो व्यू में ये चाहिए, क्या बोला है उसको, कंसोल, राइट. कंसोल भी आ गया, नीचे आ जाएगा. ऐसे करके इसके यूज होते हैं. तो मोस्टली हम क्या करते हैं, रन इससे भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ तक, यहाँ को डिबग बोला जाता है. डिबग का स्टोरी मैं अभी बताती हूँ, मीन्स बता सकती हूँ, बट आई डोंट नो हाउ मच यू विल गेट इट. हियर वी हैव टू पुट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड हियर आई हैव टू पुट द समथिंग लाइक एन एंडिंग पॉइंट. ओके तो यहाँ पर बोथ भी मैं ऐसे करके रख देती हूँ एंड राइट क्लिक करके डिबग एज बोलना पड़ता है, जावा एप्लीकेशन. ठीक है तो अभी वो क्या बोल रहा है, स्विच द पर्सपेक्टिव रिमाइंडर नो. तो हाँ अभी यहाँ पर एक थिंग है, ये ना डिबग के लिए यहाँ तक जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर मेन है ना, इसके वजह से. तो अभी क्या करेंगे, हम शो में जाएंगे, वेरिएबल हमको चाहिए होता है उसका, ये थोड़ा सा एडवांस है बट ठीक है. अदर्स वेरिएबल्स. ओके वेरिएबल हमको चाहिए होता है नो, हाउ इट्स हैपनिंग दे आर शोइंग लाइक. एंड फंक्शन F6 लगाना पड़ता है. तो वो देखो यहाँ पर आ गया. तो ऐसे नहीं आएगी, स्विच कर दो तो देखते हैं क्या आएगा. ओके स्विच करने के बाद वो जस्ट ब्रेक पॉइंट्स एंड एवरीथिंग दे विल शो इट हियर. ओके कि किसको क्या दिया है, ऐसे करके फिर से मैं चालू करूँगी तो देखो तो नहीं होएगा, बिकॉज दैट इज द थिंग विल हैपन. तो अभी मैं फिर से ट्राई बार करती हूँ फंक्शन. तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर जाएंगे, डिबग एज जावा एप्लीकेशन. ठीक है फंक्शन F6. वो क्या हो रहा है, मेन में ही अटक रहा है ना, इसके वजह से. अभी ठीक है, मैं जब थोड़े से वैल्यूज हो गए तो डिबग कैसा किया जाता है थोड़ा सा मैं बता रही हूँ. ये जस्ट क्लोज कर देती हूँ, ये भी नहीं चाहिए अभी के लिए मुझे, इसको भी क्लोज कर देते हैं. ठीक है हाँ. और फॉर एग्जांपल मेरा बिग वाला प्रोजेक्ट है, ए है, a इक्वल्स टू 6 है, इंट b इक्वल्स टू थोड़े से लेंदी चाहिए, हम बोलते हैं ना डिबग क्यों करना है, तो ऐसे करके इंट c इक्वल्स टू
a प्लस बी एंड प्रिंट क्या करना है मुझे, एडिशन, समथिंग लाइक एडिशन, तो सी मुझे प्रिंट करना है, सिंपल. एंड यहाँ पर इट शुड बी टर्मिनेट द एंडिंग विद द सेमीकोलन, ऐसा मेरा होना चाहिए. तो मेरा ऐसे हो गया. यस, दिस इज द, ऐसा किया. और एक थिंग इंटरव्यू में देखा जाता है कि आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कैसा है. ओके, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऐसे मीन्स बिग होना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए, वो बैक आए, आपको चेक किए सही कर रहा है या नहीं, ऐसे करते हैं ना, तो उस टाइम थोड़ा सा बिग फॉन्ट होना चाहिए, उनको भी दिखना चाहिए. ओके, दिस इज ओके. तो ये हो गया. तो मैं पहले ब्रेक पॉइंट्स देती हूँ, उसको बोला जाता है ब्रेक पॉइंट. ब्रेक पॉइंट्स हैविंग द लाइक स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट्स, ऐसा बोला जा सकता है. उनको पता होना चाहिए ना कहाँ से कहाँ तक जाना है. ये हो गया. यहाँ पर आएगी डिबग एज जावा एप्लीकेशन, थोड़ा सा और रन वगैरह होगा, यहाँ तक वहाँ तक होगा. ठीक है. फंक्शन F6, यहाँ पर देखो वैल्यूज कैसे चेंज हो रही है. F6 बी में क्या आया 10, सी में क्या आया उनका एडिशन, एंड ओ जस्ट एग्जीक्यूट हो गया एंड लास्ट में आ गया. दैट्स इट. सो दिस इज द, उन्होंने वही बोला है कि बाबा नो एक्सप्लिसिट रिटर्न एनीथिंग, कुछ भी नहीं हुआ, प्रिंटलन में है, ऐसे करके वैसे करके उन्होंने बोला है. समझ में आया. इसे बोलते हैं डिबगिंग ऑफ द इक्लिप्स. लाइक दिस वी हैव अंडरस्टैंड टू मच थिंग्स अबाउट दिस. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नाउ, बिकॉज these only things which I want to say. First point is like Eclipse, how to create a workspace, how to maintain them, how to switch them, how to delete. Delete I will show you now only. Yeah, and another thing is that how to like a first program, it's like a first program, that is also we have done. So I will show you how to switch it. I know that you understood. So how to delete, I don't want this whatever I have created, for example. So what I have to do, so I will go to my basic one 130, this is my base one. So I don't want this whatever I have created at YouTube. How to remove that, I will show you that also. Yes, you can see like it's now switching to the my 1302, something is there, that number, according to that they are switching. Okay, now I don't want na that, so that's why. So you can see it, my right now here is whatever the name that is. Okay, now I want to be switch here, they will be show the YouTube option. I don't want that. Okay, right, I don't want that. So how I can tackle it out, I will show you that. Go to the folders where we have created the YouTube one. Okay, I will show you that. Okay, and right click and delete it. Okay, completed this process. Yes, deleted. Go to the trash. This is the process. Okay, here go deleted. Okay, and what there's an, are you sure wants to be permanently delete this folder? Yes, we don't want that. So they will delete it everything data and close it this. Okay, come to the back to the picture. Here might be they will still show the YouTube option. So how to remove that? Go to the others. If you will put na YouTube again, they will do. So here is the trick of that. Go to the here YouTube, right click, remove from the launcher selection. ठीक है, ये कैंसिल कर दो एंड अगेन क्लोज कर दो Eclipse, उसको रिस्टार्ट होने दो एंड अगेन try to be open that. Okay, don't go anywhere, just do it this process. Just a second to be wait. It will take according to your data the times to be open this Eclipse. Okay, always this happening, no doubt is there. Okay, you could not say like why it's taking that much loading, it's happening to be normal. Okay, now I will go to the file and the switch, and here nothing is there. So according to that I have created the workspace. After then I have created launch the process for the each for the according to the JDK and the JRE. I have opened the here you can say the Java, the JDK kit, that JRE. I have created the 21, 25 like that, 24 like that, their JRE systems, that also I created. After then we have created one best program, how we can tackle it out. After then what are the function we can use for the debugging, that also we learn. Fourth thing, we have most learn how to delete that, because most of the time we are not able to delete. Okay, what happening I will say when to delete.
If we are importing, that I said already, importing, there is a function, we are doing that importing. But what happening, after importing, we don't want that, because there is a glitch happening. By mistake I could be go there without any reason. So anyway, who knows then, anyone can go. For example, after 10 years, I don't know that I having the glitch, but I'm so better to be delete that from the scratch. This is the so much important process. Okay, yes. Yes, thanks everyone to be thanks everyone to the watch this video till the end, to be understand how the Eclipse is working. Their test cases we have checked their how we can tackle it out, how we can create workspace, how we can create the first project, how we can create the project, how we can create the their packages class, everything we have learned. Thanks for watching. Stay tuned to the next video. Thanks for watching. Bye bye.